On this very special episode, I put Ailaan-e-Jang by Karakoram under the magnifying glass with a track by track go through with vocalist, guitarist Sherry Khattak and bassist Omair Farooq. Listen as we dissect each track lyrically, compositionally, and musically before discussing the impact of the album as a whole. Assalamu alaikum guys, today we are here with Karakoram once again. They were my first interview and now we are back, and this time we're going to go through the new stellar album that was Ailaan-e-Jang, a bit of an album go through / review. So that's something a bit different as well. Pehla Gana Ailaan-e-Jang, which is the title track. And what a track it is. It was first time I heard it, I was blown away. उसके गाने का मुझे सबसे फेवरेट सेक्शन लगा था ब्रिज. उसका ब्रिज वाज समथिंग एल्स, क्योंकि हाँ वो स्क्रीमिंग है, लेकिन मैं शरीफ आपसे बात भी करता, वो सायरन्स का वो पूरा गाना ना एलिवेट हो जाता है उससे. वो एक हाइप होती है which introduces the scream, which I guess is what you guys were going for as well. So that works. तो ये बताएं कि if you saw my reaction video, I gave it 5 out of 5 obviously. तो ये बताएं कि how that song came about, उसके lyrics, composition wise, जो melodies थी और the music और riffs, drums वगैरह everything. So Ailaan-e-Jang was probably the third song मेरे ख्याल में जो हमने बनाया था और जैम किया था. In fact, there was this time जहाँ पर हम WhatsApp पे डिस्कशन कर रहे थे कि यार लेट्स पूल इन डेमोज, किसी ने अगर बनाए हुए या यू नो शेयर करो, क्योंकि नॉर्मली उससे पहले हम जैम कर रहे थे. तो आई रिमेम्बर जैन शेयरिंग अ फ्यू डेमोज, उसमें से ये एक रिफ थी और ये आगे वर्स तक उसने बनाया हुआ था. कौन सी थी रिफ? इंट्रो पे है जो इंट्रो रिफ है बेसिकली द होल, जो कोरस पे भी वही बज रही है, तो वो दैट्स द मेन थिंग ऑफ द सॉन्ग. तो वो जैन ने पहले से बनाई हुई थी. So वो when he shared, so we were sure कि यार ये कुछ बन सकता है, and you know it's sounding a bit like Karakoram as well. So we were sure कि ये हम कर सकते हैं. So we started off from there और फिर इस सिर्फ हमने जैम किया, सारे पार्ट बने, कोई लिरिक्स नहीं लिखे थे शुरू में, बस जिब्रिश चल रहा था. We knew कि कोरस क्योंकि रिफ इतनी अटैकी है, चॉपी है, तो we were sure कि कोरस जरा हैवी होना चाहिए. So chorus we decided to go with the same riff, chord progression, और उसी को chorus हमने बना लिया. So उस time पे तो I was just screaming, there were no words. तो we were sure कि वो जो उस पर scream melody थी वो जरा announcement type थी in the jams. So वो indication थी उस तरफ के यार थोड़ा ऐलान type feel आ रही है इसकी. फिर बाद में you know जब lyrics लिखने का time आया तो I came up with the word Ailaan-e-Jang कि यार ये हो सकता है इसका chorus. यार it was something जो कि मुझे first जब तूफान रिलीज हुआ तब से एक वाइब आती है हमारे गानों से, या जब भी हम रिलीज करते हैं एक रॉक रेवोल्यूशन टाइप वाइब आती है. It can be relatable, उसी तरह भी आप इसको रिलेट कर सकते हो. There are two contexts to the song. एक ये है कि आप either it's the war within, जो आप लड़ रहे होते हो, so some of the words fall there, but there's another side to the song जो कि I love the fact कि हम जब भी लिखते हैं तो it has this double meaning going on कि आप हर बंदा अपने हिसाब से उसको ढाल सकता है गानों को. So that was something that we went with Ailaan-e-Jang के it can be that rock revolution that we're talking about all this time के यार, which was my interpretation as well. Yeah, that one. So it's basically that कि जी आप रॉक को एक्सेप्ट करो ना करो, दिस इज अ कॉल टू वॉर फ्रॉम अस कि जी ऐलान है अब हमारी तरफ से कि मारे आर्म्स है ये. दैट्स वन साइड ऑफ. या आई थिंक फॉर मी ये एल्बम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इतनी गिटार ओरिएंटेड एल्बम होना भी इज अ बिग थिंग. तो आज के ज़माने में पाकिस्तान में और ऑन द वर्ल्ड नहीं मिलती ना एक गिटार ओरिएंटेड एल्बम, वो भी गिटार ओरिएंटेड. चलो अगर हो भी तो हैवी नहीं होती. दिस वाज हैवी एल्बम. सो आई थिंक दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग एज वेल. और ऑब्वियसली आप एल्बम को सुन के कमर्शियली इतना आई गेस आपके कमर्शियल एम्स होंगे, लेकिन आपको पता है कि कमर्शियली इतना वो
raucous scene नहीं है तो you're okay with that. So in saying that even तो फिर उसकी ज़्यादा एल्बम की ज़्यादा impact है. Do you get my point? Yeah. उमैर भाई आप बताएं भूले. This track for me was a grower. First time इतना grab नहीं हुआ था मैं. I don't know, Ailaan-e-Jang I was like floored तो शायद इसलिए. लेकिन I've seen social media पे भूले is a lot of people's favorite track, like a hidden gem type. तो over listens मुझे भी grow किया track ने. तो a lot of explain how that came about, especially the solo. उसकी सोलो इज वेरी गुड एज वेल. यार इसका कोविड के दौरान शेरी ने इंट्रो रिफ इसकी बनाई थी वो अपने बेडरूम में, और ये सुना रहा था. तो हमने डिसाइड किया कि कोविड जब थोड़ा गुजरा और थोड़ी ईज डाउन होने लगी चीजें, तो हमने जैम कॉल की थी. फिर उस रिफ के ऊपर हम जैम करते रहे और वो इसी तरह ग्रो. हम कभी भी गाने को ना फोर्स नहीं करते कि हम उसको किसी अपनी डायरेक्शन में, हम गाना बस जैम करते रहते हैं और गाना अपनी डायरेक्शन खुद पकड़ता है ना. तो तब वो वाले पार्ट तक जाके जहाँ पे वो रिफ आती है डैं 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 डैं, और वो फिर वो अदनान भी जा रहा था हमारे साथ, क्योंकि इंट्रो रिफ तक शेरी और मैं ही थे खाली. फिर वो जब जैम किया तो बिलावल भी ऐड हो गया, अदनान भी आ गया, तो वो वाला पार्ट फिर बना था. फिर काफी टाइम बाद जाके उस पे सोलो ऐड हुआ था, वरना वो सिर्फ रिफ टाइप तक ही था, है ना शेरी? हमने पहले रिफ बनाई पोर्शन. हाँ, ये रिफ पोर्शन जो था ये जैम में डिसाइड हो गया था कि ये है ना. सो जब ये पोर्शन हम करते रहे तो हमने भी डिसाइड किया यार इसी प्रोग्रेशन पे कोई सोलो हो सकता है, कोई हार्मोनाइज कोई चीज हो सकती है. सो वी केप्ट दैट स्पेस. कोई मेरे ख्याल में 4 बार है, आई डोंट नो, इतनी स्पेस हमने रखी हुई थी. तो फिर जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो हमने स्टूडियो में फिर सोलो थोड़ा फिगर आउट और उसको कंपोज किया था. उससे पहले जैम्स पे अनान यूज्ड टू इम्प्रोवाइज एंड ऑल, लेकिन इट वाजंट डिसाइडेड. फिर जब रिकॉर्ड किया तो अनान देन केम अप विद द होल यू नो मेलोडी एंड द कंपोजिंग ऑफ इट. भूले से एक और पॉइंट रेज होता है व्हिच इज प्रोडक्शन एंड ऑब्वियसली द ग्रेट जुल्फी भाई एज वेल. वो गिटार सोलो की जो टोन थी दैट वाज वेरी क्रिस्प. So how did that come along? And Sherry, are you playing any solos at all on the album? Yeah, I played the solo on Andhera. Okay, we will get to that then afterwards. But yeah, the tone, on the solo on Bhoolay. इस दफा हमने एक चीज रियलाइज की कि there was a certain क्या कहेंगे, थोड़ी फोकस था एम्प की तरफ ज्यादा. Although we all have processors, we all use pedals, सारा कुछ, but this time we decide कि let's go as raw as possible. Let's just plug the guitar in an amp and see where it takes us, you know. So ज़्यादातर जितनी भी tracking इसके अंदर हुई भी है, a lot of tracks are just guitar, amp and a tone. Processing नहीं है essentially. Processing बहुत कम है. मतलब pedal board हमने शायद ही कोई instance हो, maybe some effects जो हमने use किए हो, लेकिन ज़्यादातर हमने amp ही use किया है. So solo का भी यही था कि we used the amp, then obviously the signal change that it went through was a compressor and EQ. वो फिर उससे होता हुआ गया. So almost all of our guitar solos are very compressed even before getting into the DAW. So हमने उसको पहले से काफी compress कर रहे थे उसको, hitting it hard. So उसमें होता क्या है कि the notes balance out and the tone is more richer, more warmer, more to the point. So इस वजह से solos जो हैं बड़े pop out कर रहे हैं the songs. Analog था सब, और are you guys not a believer in laptop पे भी amps so आते हैं, वो softwares आती हैं, वो यार आजकल you can practically do anything. I mean आप analog लेके इसको digital में कर दो, digital को लेके analog से गुजार दो. So it comes to preference, it comes to choice कि जी आपने क्या करना, क्या है सब. उस album में क्या है? What are you going for? अगर मुझे एक effect digital में ही मिलना है तो why would I go and push myself to do it in analog? There's no point. So we don't push ourselves. हाँ, everything in the album is a mix of both, you know, worlds. So क्योंकि मैंने देखा अक्सर musicians are against one or against the other part. तो I like कि आप लोग थोड़े mix best serving the song के best song सॉफ्टवेयर से आती है, ये एम्प से आती है, फिर वो यूज. There are no rules यार. In production there are no rules, at least now. अब तो कोई सीन नहीं है. पहले फिर थोड़े rules से, अब तो आप you can literally do anything. भूले का मैं पूछ गया था
lyrical meaning वो थोड़ा बता दे, then we'll move on to Raasta. So yeah, Bhoolay was also one of those songs जो कि पूरा मैंने ही लिखा, and I wrote it in isolation जब COVID था सारा कुछ. So उसका भी यही concept था कि यार COVID के बाद भी there was this realization that I felt कि यार there was this chaos जिस पे लग रहा था कि every man is for themselves, you know. During these days हाँ एक सबके अंदर एक चीज आ गई थी. I don't know, I felt it in that way कि यार you know. So उससे मैंने along those lines I made this imaginary character जिसमें मैं सोचा कि यार ये एक बंदा होगा जिसका you know he's had this hard time in life and he's realizing कि he came alone and he'll stay alone. Doesn't matter how many friends you have or how many enemies you have, but in the end he's there for himself. That's it. So उसी के ऊपर Bhoolay was one of those songs जो कि I penned down कि जी you have to forget कि आपके साथ कौन कौन है. In the end it's you. फिर आपका वो बात की थी, मुझे याद है कि ऑस्ट्रेलिया में इधर कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो टॉयलेट पेपर पे बहुत हंगामा हुआ था, शॉर्टेज हो गई थी. तो दैट्स सैनिटाइजर पे लड़ रहे थे लोग. सैनिटाइजर मास्क वगैरह. तो यस, अ गुड concept. Or turns out you're a storyteller as well, another talent on your CV now. I try as much as I can, you know, while writing. But वही बात है कि that's where being in a band comes in handy कि जब आप कुछ भी लिखते हो you don't get stuck. You can share those words with any of your members and you know ask यार ये ठीक है, or are there any thoughts that you think you can put into this. So yeah, so there is always this constant feedback going around when it comes to lyrics. Yes, I do try to write as much as I can because I have to sing it and I have to mean it. So that's why मैं बहुत अपने आप को इस प्रोसेस में ज़्यादा घुसाता हूँ. लेकिन I always take advices. Mostly बिलावल, उमैर, इन लोगों से मैं back and forth lyrics पे बहुत help ले रहा होता हूँ. अब वो स्टोरी टेल करना चाह रहे हैं गाने में. बात में मुश्किल बात ये होती है कि जैसे शहरी स्टोरी टेल कर लेता है, लिरिक्स लिख लेता है, लेकिन उसको इस तरह से करना कि उसका अपनी स्टोरी भी टेल हो रही हो, लेकिन अगर लिसनर की कोई अपनी स्टोरी है वो रिलेटेबल भी रहे उससे. That's the tricky part. तो वो रिलेटेबिलिटी भी रखनी और उसको यूनिवर्सली ओपन रखना कि मैसेज उसका हर किसी से ये चीज फिगर आउट करना मुश्किल होती है. अब जैसे ऐलान-ए-जंग है, वो लिटरली कुछ भी हो सकता है. उसके लिरिक्स किसी सिचुएशन के अंदर फिट इन करके ना, इंसान के अपने आप से जंग है या कोई असल पे कुछ हो रही है, मतलब निकल आते हैं. सिमिलरली कल नहीं भी ऐसा ही है, भूले भी ऐसा ही है, बेखुदी भी ऐसा ही है. शेरी भाई, कभी कोई नेगेटिव फीडबैक आई है कि ये क्या बकवास लिखी हुई है, को फिर go back and it happens a lot that like Ailaan-e-Jang, I remember Zain used to say यार ये Ailaan-e-Jang बड़ा cheesy सा word है. I remember him saying that, but I was sure about it कि यार ये cheesy है, ये एल्बम का नाम भी ये हो सकता है. I was sure about this because I felt मुझे बहुत heavy हाँ लगता है, ये emotionally heavy. I mean बड़ा पॉइंट मेक करता है. तो I felt कि इस तरह फीडबैक होता रहता है, अक्सर वर्ड्स पे होता है कि I remember भूले बेखुदी की रिकॉर्डिंग में there was this one word that I said in the pre-chorus. चला था, I don't know क्या था, उसको I elongated it while singing. So चला इस तरह हो गया. तो I remember बिलावल was like यार ये नहीं ठीक लग रहा, ये थोड़ा अंग्रेज हो रहा है. So I remember doing that one word again after a week जब रिकॉर्ड हो भी गया था. So इस तरह के हम लोग बहुत अपने गानों को ना बहुत critically dissect करते हैं throughout the process. बहुत lethal हो जाते हैं. Even when it comes to words, when it comes to you know tones, when it comes to parts, हम लोग बहुत lethal हो जाते हैं एक दूसरे के साथ. आपने सुना होगा obviously bleed it out by Linkin Park. I know you're Linkin Park fan. तो उसका माइक में ही कहता है कि वो इसलिए लिखा गया था, उन्होंने एक वो Minutes to Midnight लिख रहे थे तो एल्बम, तो वो ब्रैड डेल्सन गिटारिस्ट just kept on, और जो प्रोड्यूसर रिक रूबन kept on tearing the lyrics apart. तो bleed it out का ये वो मतलब था, bleed it out, take it deeper just to throw it away, जो लिरिक था कि मैं अपनी इमोशन निकालता हूँ, ये फेंक देते हैं बार. Okay. You didn't know that? No, I didn't know that. You've heard the song, right?
Yeah, I've heard the song. Yeah, तो उसका मीनिंग ये था कि he kept on bleeding his words or emotions out, और band members सारे used to shit on it. So yeah, that's they the hated fun that. part. That's the fun part in this process, to be honest. I mean, आप music से जो भी चाहो आप communicate कर सकते हो. Whatever you're feeling, whatever you're going through, कुछ भी हो सकता है. It can be anything, and you can make it. लिख के लाता है कोई लाइन और वो बड़े सीरियसली लेकर आता है और अगला बंदे की हंसी निकल जाती है कि ये क्या लिखा है. ये बहुत दफा हुआ है. There is this one word जो कि क्या था? दरीचा. Omair came up with this word दरीचा. दरीचा होता क्या है? मेरी तो उर्दू भी अच्छी नहीं है यार. क्या कहते हैं Omair? छोटी सी होती है ना घरों के अंदर पुराने स्टाइल के एग्जॉस्ट वगैरह के लिए, लाइट के लिए, रोशनदान भी जिसे कहा जाता है. अच्छा. तो एंड देयर इज दिस. इसी तरह बिलावल एक दफा एक गाने का नाम हम फिगर आउट कर रहे थे. ही केम अप विद द नेम ऐसी रैंडमली तराजू. ना तराजू इज अ वेइंग स्केल जो होता है. अब उस पे भी उसका मजाक उड़ा के तराजू के. आज भी हम जब भी कोई गाने का सोच रहे होते हैं ना, आई ऑलवेज टीज हिम बाय सेइंग यार तराजू रख लेते हैं इसका नाम, यू नो. तो इस तरह की चीजें होती हैं, बहुत हो रहा होता है एक दूसरे की टांगे के बदला लेना कि ओमैर ये कौन सी बेस लाइन, ग्रूवी नहीं है इसमें, तो आप भी थोड़ा ये तो पता है. यही मैं पार्ट बजाता हूं, ये दबाता रहता है मेरे पार्ट्स. बहुत दफा होता है बेस पे, तो बहुत होता है. मैं बेस रिकॉर्ड ही शहरी और बिलावल के साथ करता हूँ ना, तो हमारा प्रोसेस ही मतलब काफी से यही है. तो यही होता है, मैं ओवर प्ले करता हूँ और ये चीजें माइनस कर रहे होते हैं, ये काटो ये काटो. अच्छा, कल नहीं पे आते हैं. ओमैर भाई आप बताएं, कल नहीं की जो इंट्रो रिफ हेड बैंगिंग में, तो उसकी जो सोलो थी कल नहीं की, ये फर्क थी जो नेस्कैफे पे नहीं थी. And from Patreon, ये जैन भाई ने लिखी थी. It's my favorite solo on the album. I don't know why. तो कल नहीं कि वो सोलो के अलावा और कोई चेंजेस आई हैं from the Nescafe version or not, ओमैर भाई? यार स्केल हमने थोड़ा और लो कर दिया था, ड्रॉप डी पे कर दिया था इसको. ट्यूनिंग और टोन कर दिया है, ट्यूनिंग चेंज की थी, और हाँ थोड़ी पर्सनालिटी और हैवी कर दी इसकी. जो लाइव वाला वर्जन है वो तो और ज्यादा हैवी है, जो यूट्यूब पे पहले अपलोड हुआ था. ये उससे थोड़ा ये उससे थोड़ा टेम है. ये बस यार वो लाइव की एनर्जी फर्क होती है, स्टूडियो में फर्क होता है. वो एनर्जी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है गाने में, वो कुछ कर नहीं सकते आप. जब लाइव कर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल करना अपने आप को. अच्छा, तो who wrote लिरिक्स का कल नहीं का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट? कल नहीं जो था ना, वो जब हमारा 9 to 10 years बैक ओवरडोज बना था ना, तो ये उस टाइम गाना था. अच्छा. और ये एक डेमो शहरी ने जब बैंड हमारा ज्वाइन भी नहीं किया था, ये उससे पहले का इसने बनाया हुआ था. तो जब हम प्रोसेस में थे ओवरडोज गाने बनाने के, तो गाड़ी में मेरे साथ ही जा रहा था, इसने मुझे फोन पे सुनाया ये भी एक डेमो है. तो हमने बोला था चलो इस पे काम करते हैं. फिर वो जैम करके, मैं, बिलावल था, शहरी था, और हमारे एक्स बैंड मेंबर थे, ओवरडोज के ही नहीं है अब साथ हमारे. आपने बताया नहीं मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, जो लिरिक्स है वो शहरी आपको बताया, शहरी ने लिखा है वो ज्यादा. ये कल नहीं मैंने बहुत पहले इसको लिखा था. आई रिमेम्बर जब मैं शुरू से ना, जब मैं बैंड ज्वाइन भी नहीं किया था, आई यूज्ड टू रिकॉर्ड सॉन्ग्स, और मैं पूरे गाने बना लेता था बैठ के. और अच्छा. मेरे बहुत सारे गाने ऐसे पड़े हुए हैं जो कि मैंने देखे ही नहीं उस दिन के बाद से. जब से मैंने बैंड ज्वाइन किया, मेरी एक एल्बम बनी हुई है जो कि सोलो एल्बम आ रही है. एंड उसमें कुछ गाने थे जो कि जो मैंने ज्वाइन करा, मैं श्योर कि यार उनमें से दो अंधेरा की भी कुछ मेरे ख्याल में रिफ टाइप कुछ शायद हुई भी थी, जहाँ तक मुझे याद है. आई एम नॉट श्योर, लेकिन कुछ इस तरह के पार्ट्स थे जो. तो कल नहीं वाज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स. अब मेरा शुरू से एक खैर अभी भी एक वो है कि यार हम बहुत प्लानिंग्स करते हैं, हम बड़ा प्लान अहेड करते हैं कि यार ये हो जाएगा, मैं ये कर लूंगा. बट in the end it comes to that one day जिस पे आप हो इस वक्त. You don't know what comes tomorrow. You have no idea. Yeah. So that was the whole concept of कल नहीं कि जी even if you're broken, जो भी है, you have to cherish at least that specific day. You cannot
put anything on tomorrow. So बस वो एक idea था. कल नहीं was the chorus that came up first. So वही line भी है कि जो आज है वो कल नहीं. So you don't know if what you have today will be tomorrow. So बस वो एक उसी के ऊपर along those lines. अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं. रास्ता obviously is one of the older or we've all heard it. तो इसके अंदर मुझे दो बातें stood out to me was कि एक तो the guitar were very mature. इसमें I love कि you guys didn't go full distortion or guitars were held back a little bit for the song. एक vulnerability है गाने में, so that was very nice to hear. And but on the other side of the spectrum गाने में edge भी है क्योंकि end में जो screams हैं. So how did the idea come about कि इस थोड़ा mellow से गाने में end में screaming करते हैं? The point of the lyrics also जो इस तरह चल रहा है ना रास्ता का, वो है ये कि आप शुरू में it's like you're falling apart, you cannot find a way, but then at the end of the song there's this little hope going on. So वो scream basically is more indication towards finding your way. I found it. Again you're telling a story. रास्ता जीने का, रास्ता जीने का, I found it. वो होपलेस है, वो ढूंढ भी नहीं रहा, लेकिन एंड पे जाके ना गाने पे रास्ता मिला नहीं है, लेकिन उसको ये होप आ गई है और ये विल है उसकी कि अब मैं ढूंढ लूंगा रास्ता जीने का. मतलब he's got that will going on even in the when the song stops after the bridge portion, the lyrics change a bit कि पहले था ढूंढू क्या, and then it comes ढूंढूंगा रास्ता जीने का. So that changes along the song and in the end it leads to the end. और guitars की बात करें तो you held the distortion back on that song. Obviously vulnerability है, वो mature है, but interesting tones भी हैं उसमें. तो guitars के बारे में. Yeah, there was this song I heard of, I know U2 का था या Bon Jovi का था, मुझे सही से याद नहीं, but I remember hearing that song. उसमें हो क्या रहा था, मैं I whenever listen, मैं पहले तो अपने उसकी पूरा गाना सुनता हूँ, फिर मैं उसको dissect करने की कोशिश करता हूँ whenever I listen to a song. तो उसमें एक part था जिससे मैं बड़ा inspire हुआ था. There was this clean guitars, right left pan हुए हुए उसके अंदर, and there's this distortion delay tone जो कि aggression create करिए, not the rhythm guitars. So वहाँ से मुझे idea था कि रास्ता में if it goes to that crescendo, I maybe can pull that off कि अगर मैं, क्योंकि guitars throughout right left clean चल रहे हैं, there are no gain in it, या बड़े easy से हो. Yes. So in the end I was sure कि रास्ता में there would be a delay type driven चीज जो कि end में आती है with the scream. The moment the scream hits in, that part hits in as well. So वो एक idea था जो कि I wanted to pull off, और वो इसमें बड़ा I think it works really well. Doesn't takes away from the song the cleanliness of the song, but at the same time it has this impact. Edge आता है उससे. So yeah, it was very nicely balanced in the end. तो रास्ता पे are you playing guitar as well या सिर्फ दो अनन और जैन है? So रास्ता पूरा रास्ता के जो ट्रैकिंग थी वो गिटार्स सारे मैंने बजाए. अच्छा. in the track, cause ये डेमो बहुत पहले से बन रहा था, even before तूफान. अच्छा. तो तूफान से पहले ही इसका डेमो बन चुका था. इसके गिटार्स भी काफी हद तक हमने डेमो वाले ही यूज करे थे. So and we knew कि हम अगर इसमें एक और चीज ऐड करेंगे या एक और गिटारिस्ट ऐड करेंगे, I don't know, it will maybe jumble things up. Because उसमें मैंने already इतनी ओवर लेयरिंग की हुई थी already. 3 गिटार्स वैसे ही बज रहे हैं उसके अंदर. So we came up with this कि हमने जैन से सबसे डिस्कस किया कि यार let's keep this song the way it is and just release it बगैर सोचे. So एक और अच्छी बात बैंड में भी है, बड़ी अच्छी है, इस एल्बम में भी इनफैक्ट बहुत सारे गाने जिसमें एक गाने में शायद अनान नहीं बजा रहा, एक गाने में जैन नहीं बजा रहा, तो so we let things go if the song requires it. हम करते हैं, जरूरी नहीं कि अगर 5 मेंबर्स हैं तो 5 के 5 बजा रहे हैं, you know what I'm saying. तो वो एक बड़े अच्छे, एक सबकी आपस में एक बड़ी अच्छी एक केमिस्ट्री है कि we know when to, okay, yes,
ऐसा ही होना है. You guys are very mature musicians, regardless of your young age. I think वो Nescafe और Yeah, पढ़ने का ये फायदा बहुत हुआ है. बिल्कुल. बात है. बेखुदी पे आते हैं उमैर भाई. तो orchestral part, this is keyboards. I know Sherry भाई you've learned keyboards in quarantine, लेकिन उमैर भाई I know you play as well. तो orchestral part, you came up with that at the beginning? नहीं, ये शेरी ने रिफ जो है गिटार पे बनाई हुई थी. ये वाली जो इंट्रो है ये जैम्स पे हमारे गिटार पे बजता था. अच्छा, it sounds like a violin or something. शेरी ने सारा प्रोग्राम करके इसको ऑर्केस्ट्रा किया हुआ था. Yeah, we remember deciding कि यार बेखुदी should be the first track of the album. So I was thinking कि यार हमेशा bands के ना intro होते हैं album के अंदर, छोटे intros होते हैं. So I was like कि यार बेखुदी का जो हमारा intro है, अगर हम उसको कोई orchestral बना दें as if it's the start of the album, तो वो बड़ी अच्छी एक vibe आ सकती. So I was playing along, ज़ाहिर है keyboard भी थोड़ा बहुत सीख लिया था, तो I was fiddling around. So वहाँ से वो बस मैंने एक orchestra बनाया, एक file up करके एक 5-10 piece orchestra, I just laid them down. So वही use हुआ है. अच्छा, तो ये आप जब live play करेंगे तो वो you will play this on guitar as well, the intro? We have no idea right now. हम अभी इसी process में 13th को we perform. Yeah. Yes. Sampling पे ही जाएंगे, sample करके चलाएंगे इसको. हाँ, hopefully हम कोशिश ये करें, because there are a lot of things, जैसे ये siren भी है Ailaan-e-Jang का, this intro हम चाह रहे हैं वो सैंपल कर लें ताकि वो एज इज हम यूज कर सकें. कोशिश यही है. ठीक है. अच्छा, वन ऑफ माय वेरी लिमिटेड नेगेटिव इश्यूज विद द एल्बम, इशू तो नहीं है, थोड़ा मुझे इम्प्रूवमेंट नजर आ रही थी कि बेखुदी की इंट्रो रिफ नीडेड मोर डिस्टॉर्शन. आपको ऑब्वियसली आपको फील नहीं हुई बात, लेकिन डू यू थिंक कि डिस्टॉर्शन का रूम था उसमें इंट्रो में? We thought of it in the jams, लेकिन हमें इस गाने से ना बहुत निर्वाणा वाइब आती थी. ठीक है. So we wanted that grungier sound rather than distorted heavier sound with this song specifically. Now we understand एक जो चीज थी, your observation is very right, because we remember this chorus wasn't made in the jam. So that chorus turned out to be heavier, with the screams. So that was one balance जो कि हम पहले नहीं था वो, तो वो उसकी वजह से maybe you feel कि यार distortion ज़्यादा होनी चाहिए थी. But when it was structured, we were going for a Nirvana type vibe जिसमें clean stratty type guitars, ज़रा crunchier ज़्यादा. So yeah, but I feel it works for the song. That's why it makes it little more interesting. अगर हम distortion उसमें भी करेंगे. Yeah. Fair enough. और बेखुदी का इससे मैंने पेट्रोन पूछा था, means trance, तो what is that song about? So बेखुदी is all about this social dilemma going on. तो इसके lyrics भी इसी तरह ही हैं कि जी we all are living in this bubble, and we have these two personalities. कि जी एक मैं खुद हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलेंगे तो मैं ऐसा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक पर जाएंगे तो मैं वैसा हूँ. We're not the same person. इस dilemma, इस delusion में सब लोग हैं आजकल. Not that we're against them, but it is something, it is affecting lives. लोग उसको ज़्यादा preference दे रहे हैं बजाय अपनी असल life में. बेरंग जिंदगी के lyric makes sense now. Yeah, so that's the whole point कि जी आप उस and they are getting stuck in that daldal, it's quicksand, right? So that's the whole direction. I remember I was writing this here in the studio, and मेरे साथ बिलाल बैठा हुआ था. तो second verse में बिलाल ने मेरी बड़ी help. Bilal is a great friend. He's always there with us. He's always pushing us. He's always there helping us out. रास्ता की वीडियो में भी उसका. Yeah, he's a musician. He's a great vocalist. So उसके भी साथ हम लोग बड़ा hang कर रहे होते. So वही बात है कि when it comes to lyrics ना, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपने आप को उस कैरेक्टर में डालना, और I struggle a lot in that department. मैं बहुत हेल्प ले रहा होता हूँ, but when I'm in a mode तो हो जाता है फिर. अच्छा, ठीक है.
तूफान पे आगे बात कर रहे हैं। तूफान में पिछले इंटरव्यू में थोड़ी बात हुई थी कि उमैर भाई आपसे स्पेशल तूफान की मेरे लिए जो obviously the raves and the screaming and everything is good, लेकिन for me what takes the cake is उसका bass and drum work. तो उसका बताएं कि I think Toofan is not Sherry song, it is yours and Bilawal song actually, क्योंकि rhythm section drives the song, उसका बहुत ज़्यादा impact है. तो उसका बताएं कि how did the rhythms of the drums and bass come about, और I think this वाले version of studio जो पहले version थी did the exact same if I'm not, I didn't hear anything else. note for note. यार इसका स्पेशल सीन ये था, मुझे इसका किक पैटर्न बड़ा अच्छा लग रहा था. किक है भी इसका ढक 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 और सारा अप में चल रहा है, तो गिटार्स थोड़े डिफरेंट पैटर्न पे चल रहे होते हैं और बेस बिल्कुल किक के साथ सिंक हुआ हुआ है. तो वो अगर आप दोनों इंडिविजुअल सुनो ना तो शायद आपको लगे यार कोई मसला है, ये तूफान तो नहीं है अगर आप खाली बेस और ड्रम सुन रहे हो या खाली गिटार सुन रहे हो. वो लेकिन मिक्स होके जब साउंड आती है ना तो वो फिर एक सही कॉम्बिनेशन बन जाता है उसका. वो कैसे हुआ है ये मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन इसके अंदर मैजिक इन अ बॉटल, किस्मत. हाँ, वो बिलावल के साथ बड़ी अच्छी किक के जैम के ऊपर ही वो बन गया था एक पैटर्न जो किक के साथ चल रहा था उसमें. तो आई थिंक उसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो ना होता तो शेरी भाई की जो स्क्रीम्स थी वो फिर वो इम्पैक्ट नहीं होता, तो वो पूरा गाना एलिवेट हो जाता है. बेस बड़ी उसमें डायनामिक है क्योंकि पूरे गाने में बेस नहीं आती, किसी पॉइंट पे आती है जाती है आती है जाती है, तो वो उस वजह से भी वो थोड़ा स्पेशल लगता है बेस के लिहाज से. और लाइव में तो इट बी अ मॉन्स्टर. लाइव में यार बहुत मजा आता है, हैवी. अच्छा, रुक जा is actually Ailaan-e-Jang and Ruk Ja were I can't decide which song I like more. तो हाँ, रुक जा is very interesting track. एक तो लिरिक्स में बाद में आती है कि उसके अंदर जो I think फर्स्ट कोरस के बाद थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन जो है वेरी स्पेसी सा जो है, उसके अंदर मुझे इंसेप्शन और हांस जिमर वाइब्स आती हैं. Do you feel the same way? Yeah. So how did that come about? And उसकी स्टोरी बताएं. और obviously और हाँ, दूसरी उसकी स्क्रीमिंग थी एंड में, वो डिफरेंट मुझे फील हुई थी. दे नॉट ऐलान-ए-जंग तूफान वाली जो स्क्रीम थी जिसमें पूरे मेटल और डिस्टॉर्शन पेडल जो आपके गले में है वो नहीं लगाया है वहाँ. इट इज मोर फॉर एंग्विश. थोड़ी इमोशनल है ज्यादा. या वो थोड़ी एंग्विश है उसके अंदर, वो स्क्रीम वो बहुत इमोशनल है. तो इट्स आल्सो I don't know, are you actually singing really high or is that actually a scream? थोड़ा mixture भी शायद हो. Yeah, it's a mix. It's a mix in that. तो ये रुक जा के बाद how did that spacey arrangement come about after the first chorus and the lyrics? So Ruk Ja was one of those tracks जो कि हमारा मेरे ख्याल में रास्ता के बाद हमने बना लिया था, but it was very different then. उसमें drums भी थे शुरू में. It had this फर्क पेस थी उसकी. तो I remember when we brought it down when we were recording, Zulfi was like यार ये मुझे नहीं ठीक लग रहा. ठीक है, he was straight up, he was like यार ये filler song लग रहा है. इसको cause पहले इसकी शक्ल कुछ और थी, अभी जो है वो बिल्कुल फर्क है. So it was a band song more उस वक्त. So we were stuck यार क्या करें. बिलावल से मेरी बात हुई, वो कहते जुल्फा was like यार ड्रम्स शुरू में नहीं होने चाहिए, it had toms और सारा कुछ था, तो हम फंस गए थे. So I remember मुझे जुल्फा ने कहा कि यार तुम इस पे कोई स्पेसी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सोचो, तुम जैसे करते हो, मीशा के भी अरेंज करते हो गाने और इनके भी करते हो, तो उसको इस राउट में लेके जाके देखो, मे बी शायद कुछ हो जाए. So I remember coming back स्टूडियो और मैंने फिर बैठ के ना सिर्फ ड्रम्स ऑफ करके वोकल्स और एक गिटार की लेयर ऑन करके मैंने उस पर फिर सारा ये अरेंजमेंट सारा कुछ मैंने कहा यार बस करते हैं. सो ऑब्वियसली साउंड ट्रैकिश फील मुझे बहुत पसंद है. इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, इस तरह के मैं स्कोर्स मुझे बहुत पसंद है. सो आई फेल्ट के दिस स्टोरी नीडेड दैट स्पेस,
because story is very बड़ी मूवी लाइक है. उसका अरेंजमेंट तो हमने बना ली, तो कॉन्सेप्ट जो था वो उसको हेल्प करने के लिए it needed to be spacey. The concept was कि जी the world is ending और there's this a guy and a girl, or the girl is leaving him. उनके कोई आपस में कोई हुआ है. So the guy is asking कि यार, I mean the world is ending, so why go now? Stay, रुक जाओ. So that's the whole visual and concept behind the song. तो मेरा जो इंटरप्रिटेशन थी वो थी कि someone's dying, तो मेरी तो like someone is dying तो बंदा कह रहा है रुक जाओ, don't leave me सेंस में. आपने जो इंटरप्रिटेशन पहली बताई तो मेरे ख्याल में जो एंड में जो फिर भी वो स्क्रीम सुनी थी, लेकिन वही आपकी जो एंग्विश टाइप इमोशनल स्क्रीमिंग थी एंड में, that is when the world is actually ended, or it is ending. Yeah, that's the climax of the song. Ending, yeah. When the band comes in, that's the apocalypse, the end of the world. Yeah, so that actually, I think those are और दूसरा रुक जा पे I have to congratulate you कि आपकी low range देखने नजर आई है. तो पहले मुझे थोड़ा फील होता है, लोगों को फील हो कि शेरी is very high oriented, high singing या screaming, लेकिन इस गाने से proves के low end भी है. So I think that's very important. Yeah, I'm naturally a tenor singer, so वैसे भी मैं low जा नहीं सकता इतना, but this is maybe as low as I can go. Maybe I'm not sure, but yeah. एल्बम की बात है, मैं हमेशा में सुनता हूँ कोई नई चीज सुनने को मिलती है. I don't know, you guys इतनी लेयरिंग डाली है. मैंने कहा ये पहले गिटार लेयर या ये ड्रम बीट या किक ड्रम पहले मैं नहीं सुना था, मैं अब सुन रहा हूँ. तो ये चक्कर है. अच्छा, अंधेरा पे आते हैं, which is my opinion में the weakest song of the album. I don't know, I think the song writing on the rest of the record is so mature. उसका बार इतना ऊंचा हो गया है कि I'm not saying there is a very bad song, लेकिन as comparison to the other songs, it doesn't, in my opinion, doesn't stack up. Maybe it's also a bit more commercial or poppier oriented song, but फिर मैं सोचता हूँ कि maybe you guys did on purpose, वो जान के रखा हो just for that commercial appeal, शायद इसलिए हो. तो उसका लेकिन एक सेक्शन जो मुझे पसंद आया था जो पहले वाले वर्जन में था, वो जो ब्रिज सेक्शन था थोड़ा ब्लूजी सा था, और which you just told me you added that part. So why did that change? Why did you put in Andhera on the album, even though it's been out for a long time, even though it's an overdose song? And what is Andhera about, obviously? So yeah, Andhera, if you go deeply in the lyrics, it has very serious meaning. I mean, Andhera is I would say, if I have to, put my lyrics or my writing in order, Andhera would be on top, because it's very, it's a song that'll get you out of something. That's what I'm sure about it. Mental health wise? Yeah, it's a song जो के, I mean, the lyrics itself, कैसी है रोशनी जो करे अंधेरा, what's this light that's not light, it's not helping me, it's something else. So it's this cry, कि आप you're crying out कि यार what is wrong, and then there is this part जिसमें you picture yourself, a man or a person pictures himself, invincible in this world, but they don't realize they're just this little piece in a puzzle. जिसमें वो lyrics हैं कि जी डूबते सूरज को तुम देखो, अपना गुरूर निकाले फेंको. So how is this sun setting? Do you even know? So it's deeper, it's more philosophical, if you say. I don't know, I don't have words to put in describing the song. I cannot describe it myself. So आपको गाना बहुत पसंद है इसलिए आपने कहा कि it needs to be on the album. So one thing was that, the other was that this was the first song that we came up with as a band, so we were sure, and we released it previous. Khamoshi tha, but this was the one song that got us into basement
that changed our lives some way or other. I was selected in basement because of this song. So this song has this special relationship with us. नजर आता है उस गाने में कि it's an older song, your song writing and your singing, वो vocals ही समझ आती कि वो और अब में फर्क हुआ है और progression हुई है in a positive डायरेक्शन. तो वो जो सेक्शन था, वो जो ऐड हुआ था ब्रिज में, उसके बारे में बताया. उसके बिल्कुल एंड में there's like a chuggy riff. I wish there was more of that. You know what I'm talking about? बिल्कुल आखिर में उस ब्रिज में वो ब्रिज के बिल्कुल मुझको डग 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 होती है and then the chorus I think starts again. Oh, solo के end में. Yeah. तो वो जो सेक्शन था, I think original वर्जन वो सेक्शन नहीं था. So हमारा अंधेरा का point of view था कि we wouldn't change a thing. अंधेरा में भी there's no one else playing. It's just me, Bilal and Omair. So we wanted it to be the same. We didn't want to change anything. Didn't want to add anything. अच्छा same हम चाह रहे थे कि it's the same. It's almost the same. तुम्हें याद नहीं होगा फिर. ठीक है. तो वो सेक्शन के बारे में बताएं, जो बीच वाला जो towards the end bridge you can say. So yeah, there's this fun fact about the song. We had this guitarist in our band back in the day. His name was Faddy. He left later on, but he was in the process of making this song with us. So the solo that you hear in the song, every note in that solo is basically composed by that guy. And I'm just playing it back. I'm just playing it, whatever the notes. I remember him, and this solo wasn't even recorded. He was just playing this part randomly in a rehearsal, and Bilal somehow recorded it on his phone. And I remember when we recorded it back then, मुझे वो phone पे सुना के एक note बता रहा था कि तो ये हुआ. So I just replicated the whole solo, and we have even in the album, even in the song credits, we have mentioned him. So the solo is all him. And that ending lawsuit incoming. No, we made sure that doesn't happen. But yeah, so that ending part was also his idea. The bangs, that was his part. ठीक है. Alvida was another track कि मुझे थोड़े सुनने के बाद it grew on me. The first time I listened to it समझ नहीं आई थी, क्योंकि उसका एक तो structure is a bit different as well. I felt शायद वो बात थी, and it is very acoustic oriented. I know अंधेरा में काफी acoustic, लेकिन Alvida was I think acoustic arrangement oriented. तो अलविदा का बताएं that lyrically obviously important है उसको discuss करना. और दूसरी बात ये है कि another small gripe I had was कि I wish ending में थोड़ी और guitars, not proper headbanging, but like वो जैसे रुक जा में थे, वो थोड़ा उस साइड पे थोड़ा heavy जाता तो ज़्यादा अच्छा prog rock की ending मिलती. तो I felt कि वो बेहतर होता. So there was only these few issues I thought might issues तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी I would have felt as a listener वो बेहतर होता. तो आप बताएं अलविदा कि वो end section क्यों नहीं थोड़ा heavy हुआ, और lyrical meaning obviously, and the chorus is very emotional as well. That one वो feel होती है आपको. Yeah. So अलविदा एक ऐसा गाना था जिसको we knew कि बड़ा फर्क गाना है. This is not, अगर आप मुझसे personally पूछे ना, अलविदा एक गाना और बाकी album एक तरफ है, it's that different from the whole album. And we kept it really simple. We kept it very vocal oriented. Even in the mixing, even when we were arranging it, हमें पता था कि हमने ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं है इसके अंदर. So this riff was made back in the day जब demos मैं कर रहा था. रास्ता का मैंने demo किया था, तो उस वक्त अलविदा का भी मैंने guitar part बना लिया था acoustic का. So that was recorded. उसके बाद we were rehearsing before COVID, तो उसमें मैंने फिर we came up with this कि यार ये इसको करते हैं कुछ. तो इसकी lyrics नहीं लिखे हुए थे. So lyrics के लिए what I've recently I'm trying to do आजकल जब भी मैं लिखता हूँ, मैं I try to put myself into these situations जिसमें maybe I'm not.
you know. So Alvida is one of those situations जिसमें मैं, I mean, I'm happy right now, right? I'm fine, but I go into the future and I try to think कि ये हो गया और फिर मैं उस पे लिखता हूँ. Alvida is one of that song. इसमें I've destroyed myself in the future and I'm writing about it. So it was really hard. I mean, cause you know, and that also is one of those songs जिसको आप interpret कर सकते हो अलग तरीके से. It can be a love song, it can be a breakup song, it can be that you're saying goodbye to someone you really love, someone who's dear to you, someone is your family member and you're saying goodbye to him. So it's उसकी भी एक open to, you know, एक है उसके अंदर एक vibe कि आप अपने ऊपर उसको relate कर सकते हो. So I remember doing this song, it just broke me, man. I mean, even in the recording room I was destroyed. बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. Emotionally, singing. Yeah, emotionally. Yeah, emotionally. It was technically it's not that a, you know, hard song, but emotionally it was really hard. Even in the final recordings, I'm half of the time I'm almost in tears. So that song is very emotional in terms of, you know, that I don't know. It has a special place in my heart. ठीक है. और एंड में you decided against a heavier ending. So why was that? You want to keep the emotion of the song? That was the one part that we were stuck in. We were done with the arrangement, we were done with the recordings, and it was there. But Alvida की जो आखिरी backings हैं, that's basically 4 days before the release. तब हमने record किए. Yeah, the backing vocals, the whole choir coming in. Yeah, because Zulfi bhai was sure. मुझे याद है, he was like, यार ये end पे this should be a lot of people singing because it's a story of a lot of people. So हर कोई relate करेगा तो इसको end पे हमें सबको गाना चाहिए. So I remember we 4 दिन पहले एल्बम की रिलीज से हम लोग vocal booth में track कर रहे थे. 4 लोग गा रहे हैं एक साथ. So that was the concept. And yeah, but yeah, it turned out great. Yeah, I'm glad. मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि एक बंदा है, उसको लाइफ चेंजिंग डिसीजन है and he used to leave his family for whatever reason to never see them again. तो वो मेरी ये इंटरप्रिटेशन थी उसकी. But you see, the lyrics don't tell that. I mean, lyrics की अगर आप पहली लाइन सुने कि चलता रहा तेरे लिए भूले चला. So is either आप you can put a guy with a girl, you know. Then the next line is के जलती है राह पे जलने चला. So he knows that the path he's taking is not easy, but he's going because of that person. That person can be anyone. I like it आप open interpretation रखते हो. You don't spoon feed the audience or interpretation. Do you enjoy कि आप कोई फर्क interpretations बताएं of your own songs? I love it. I absolutely love it. Whenever I get different interpretations, I love the fact कि यार चलो at least हर कोई अपने हिसाब से सोच रहा है उसको और you know. So I love it. That's good. Album की बात होगी. I think it's important to discuss the album in context of the music scene in Pakistan because I think the album is a game changer in Pakistan क्योंकि I think उस पार के बाद की ऐसे album नहीं से सुनने को मिली. I know rock albums आई भी हैं लेकिन इतनी guitar oriented album. Some of my favorite rock albums were Dhoom by Kal or Khwab by Kashmir. There's some other albums मुझे याद नहीं है लेकिन इतनी guitar oriented album, no bullshit, no nonsense style जो आप लोगों का था, non apologetic in your face. तो वो चीज़ें बहुत important thing. You weren't shying away from who you are, which is a big thing, or especially in a Pakistani society, in a Pakistani music scene, जो आप staying true to yourself is even harder to do. So I think you need to be commemorated on that. तो आपको क्या लगता है? Was that hard to do, staying true to yourself? No, it was easy. I mean, हम तो इससे अच्छी बात ही नहीं कोई. We're doing what we love. We're and somehow audience is connecting with us. वरना बहुत सारे bands इसमें struggle कर रहे होते हैं कि they try to do what they love, but audience is not connecting with them. तो वो एक फिर वो they switch from one genre to another. We have been blessed. We have been lucky enough to, you know, at least
sit down as individuals and make a song जो कि हमें खुद पसंद है. So that's a blessing, and so happy that audience relate to it. Audience support us. They love what we do. So it's a blessing. और एक और बात है कि एल्बम इज अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ के it is actually a flag bearer for rock music as a whole. I think not just in Pakistan, I think around the world अगर rock music का state देखे it's not good. Like आप charts में देखें जैसे 15 years पे 20 साल पहले जो top 10 top 20 में बहुत rock songs तो वो सीन नहीं रहा. तो I think his album is actually a flag bearer or like an anthem के rock music as a force अभी भी है. ये अगर मरेगी if it's gonna die or not वो बात तो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, but if we go down we'll go down fighting even. So I think in that context ये album उस लिहाज से भी important है. मेरी इंटरप्रिटेशन तो ये थी as well. So do you feel the same way? Were these sort of themes आपके दिमाग में थी when you were making this album, या it just happened? Yeah, for us, I mean when we released Toofan, उसके बाद there was this audience जो कि कहीं नहीं थी, and they were desperate to have this rock sound. They wanted songs like these. हमें बड़ा response आया. But then we released Raasta. उसके बाद हमें थोड़ी bashing हुई इस पे कि यार आपने expected soft गाना बना दिया. They were expecting another heavier song. So we knew कि there isn't any band that's coming out. I mean, there are a lot of bands that are, but somehow something is not working. I don't know. I mean, I'm not the one to judge. There is we don't know how it's been said कि जी ये लोग हैं जो कि rock को बचा रहे हैं, ये लोग हैं who are the torch bearers. We don't know. And we don't know as well. We're just doing our thing. We just love rock. We just emote ourselves. We just love being, putting our heart into the song. That's it. That's what we're doing. We're not planning such agenda कि जी बस rock को बचाना है या rock. There is no such thing. We don't think that way. We just want to put out songs. We want to make relatable songs. We want to make songs that change lives. So that's our aim. That's it. Nothing else. मुझे याद है जब तूफान आई थी तो अहमद अली बट के पोस्ट आई थी कि this is what's missing right now from the Pakistan music, and I was like that is so true कि पाकिस्तान म्यूजिक में ऐसे तूफान टाइप गाना I don't know कब आया था आखिरी बार, even though there were heavier songs you hear, लेकिन वही तूफान का impact level, even though there probably are heavier songs than तूफान पाकिस्तान में भी, लेकिन उसका impact level जो था ना that was something else. So I think this album is very, very important in the whole context of Pakistani music industry, the scene, and especially the raw rock scene, and keeping it afloat. Or maybe शायद आप लोगों से और लोग inspire हो कि you should rock bands और भी आएं फिर. Even though you guys are young yourself, लेकिन if you hear the album you can't tell that you guys are young people. Even though rock is a young genre, I mean it a more the mature sound way or the technical playing side of के बात तो मैंने कहा कि if you listen to the album or like if you don't know you guys, so you're thinking you're both mature musicians, a very aged musician who know their craft well, which actually a compliment to you guys in a way कि आपकी youngish age में फिर आपको इतना playing ability है, which I think Nescafe and session playing helped in that regard. So in conclusion, two things. First of all, अब तो album भी आ गई है. Album, I can say it now, successful album है, even though it's early days. So as a fan, I know you get this a lot कि session playing, cut down time या continue, या इसका पाकिस्तान में फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होता है, ये एक और बात भी है. Yeah man, I've left session playing. I mean it's been a while now. I mean COVID से 2 महीने पहले I quit. I mean उसके बाद से मैं I've not doing any session. Yeah I've left all of them, and I've been doing I've been making music with my band, and I do projects like studio projects, recording projects, but I don't do shows now. So that's been out of my life for like I guess 6 months now, maybe 7.
financially you aspect to session playing साथ आता है, तो was that hard to quit? क्योंकि I guess session playing pays well when Yeah, your own obviously, music doesn't pay well as well. no, session playing is a constant gig type situation. So yeah, you get to make money, but I've learned to live that way now. I've अपने आप को थोड़ा मारा है इस चीज को लेके कि चलो it's I mean I'm trying, I'm doing stuff, I'm doing projects, I'm trying to work in studio more, so hopefully I think it'll be. So little birdies have told me that little birdie told me you started working on second album. तो एक बात तो पता चल गया कि ये folk electro pop album तो नहीं होगी, तो how is the progress, like demos stage पे अभी pre-production essentially? Yeah, so अभी वही process वापस से शुरू हो गया है. I am doing some demos, कुछ Bilawal is sharing some beats कि यार इस पे कुछ करते हैं. Zan is also pulling in some demos, so we are compiling, we are planning, and hopefully जल्द हम उसको record भी करें. Evolution in the sound or same or mix? Not sure, we don't know at all. You don't even know. Let's see where it takes us. Acha, fair enough. So we'll conclude the interview there. Thank you for your time. I love to getting into the nitty-gritty inside of Ailaan-e-Jang and the making process. So thanks for that. Thanks, man. Thanks for having us.